Hello friends, चलो तो डिस्कस करिबा OJS prelim previous year questions 2012 रो चलो तो स्टार्ट करिबा sorry question number 1 RC Cooper versus Union of India is commonly known as यार correct option होची option C bank nationalization case. Question number 2 number of fundamental rights guaranteed only to citizens are it लिखा है only to citizens तो केतेटा एथरे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन ए 5 पांचटा फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स को मान सिटीजन्स को अवेलेबल अच्छी ओके को फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ये पांचटा केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल अच्छी और रेस्ट जी से इंडियन सिटीजन्स को भी फरेनर मान को भी ओके ताल चलतु क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोइंग स्केड्यूल रिलेट्स टू द म्युनिसिपालिटी यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन डी स्केड्यूल 12 तापर जानतु क्वेश्चन नंबर 4 प्रेसिडेंशियल सैटिस्फैक्शन फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन सी नो करेक्ट ऑप्शन होची सॉरी नॉट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू करी हबो ओके सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तापर चलते क्वेश्चन नंबर 5 द करंट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस अंडर को आर्टिकल तार करेक्ट ऑप्शन होची आर्टिकल आर्टिकल 253 आर्टिकल 253 केबे इंट्रोड्यूस कराइतला 2011 रे ओके तो नेक्स्ट 6 Question number 6. The legislature of a state may impose restriction in trade, commerce and intercourse under which article? यारो correct option होची option C. Article 304. तो चलो तो question number 7. Article 245 has been interpreted on the basis of यारो correct option होची doctrine of territorial nexus. तापर चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड एट को प्लेस रहितला दीटा प्लेस रहितला हैज बीन अमेंडेड एट ऑप्शन बी 2 प्लेसेस ओके तो को प्लेसेस रहितला गोटे तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऐड कराइतला आ गोटे टिके रहंतु 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए तो एट लिखाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट प्रियम्बल ले कौन कौन चेंजेस आनी थिले आगुरु 42nd अमेंडमेंट पूर्वरु कौन थिला हमर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला प्रियम्बल ले लिखाई लेकिन तापरे सेटा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ए दीटा वर्ड ऐड करा गला आउ यूनिटी ऑफ द नेशन थिला ताकू कौन ताकू अमेंडमेंट परे सेटा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हला ओके सेटा होची 42nd अमेंडमेंट तापरे देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 द फॉलोइंग स्टेट हैज 2 हाउसेस को स्टेट दीटा हाउस अच्छे जमती विधानसभा विधान परिषद आमर तो केवल ओडिसा रे विधानसभा अच्छे तो यांक भीतर को स्टेट दीटा जाक अच्छे माने विधानसभा थिबो विधान परिषद भी थिबो तो एटा होची ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी कर्नाटक ओके ताल चलंतु क्वेश्चन नंबर 10 द प्रोविजन्स रिलेटिंग विद द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अमेंडेड तो जोटा यार करेक्ट ऑप्शन कौन होची और करेक्ट ऑप्शन होची बाय स्पेशल मेजॉरिटी ओके द प्रोविजन डीलिंग विद द सुप्रीम कोर्ट जो प्रोविजन टा सुप्रीम कोर्ट सहित डील करछे सेटा केमती अमेंड करी हबो बाय स्पेशल मेजॉरिटी ओके तापर चलंतु क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को चलंतु आसी जिवो बे सीपीसी A suit is bad for non-joinder of a necessary party as provided को एतर अपन ऑर्डर 1 रूल 9 ओडे सब मन रखिया पड़िबो को थे लिखाई छी तो सेटा सटीक ऑप्शन होचे ऑप्शन बी ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी लिखाई छी a suit is bad for non-joinder of a necessary party okay then question number 12 को हमें छिबा question number 12 होची legal representative under section 211 of CPC means a person who is
Option A, relative of parties to the suit. Option B, co-sharer of the benefit assuming to the parties. Option C, close neighbor. And option D, who is in law represent the estate of the deceased person. तो आपण कोटा ठीक लागुची এটা এটা बहुत सहज এটা হচ্ছে অপশন ডি হু ইন ল রিপ্রেজেন্টস द estate of the deceased person যে মরিଯାଇଛି तार estate को जे रिप्रेजेंट करिवो लीगली ताको ही हमें लीगल रिप्रेजेंटेड कहबा तापरे क्वेश्चन नंबर 13 okay question number 13 which court can direct the parties to opt for any one mode of alternative dispute resolution under सटीक आंसर होची ऑप्शन ए order 10 rule 1A of CPC ओके एटा मन रखिबे आपण सब order rule कोन कहूची तापर 14 होची discovery by interrogatories and inspections has been provided under B okay सटीक आंसर होची B under order 11 of CPC okay discovery by interrogatories and inspection has been provided under order 11 तो चलन तो 15 को clerical or arithmetic mistakes in judgment decrees or order etc can be corrected और option होची option A option A under section 152 of CPC रे clerical or arithmetic mistakes in judgment decree order जदि clerical or arithmetic mistake हेतबो तो correct कराई परिबो ओके सेक्शन 152 ऑफ CPC एटा आपन मन रखिया पड़िबो जते सब सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन अछि सेटा को आपन मन रखिया पड़िबो तबे 16 होची compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses are imposed एटा होची ऑप्शन सी under section 35A of CPC okay तापरे हमें जिबस क्वेश्चन नंबर 17 abatement of proceedings is governed यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी by order 22 of CPC okay तापरे question number 18 a temporary injunction can be granted to a party establishing option A that there is a prima facie case in the favor option B irreparable injury to him in case injunction is not granted option C balance of convenience in his favor option D all of the above तो यार सटीक आंसर होची ऑप्शन डी all of the above okay এই তিনটা যদি অপশন এ অপশন বি অপশন সি যদি হেইথিবো তাহলে টেম্পোরারি ইনজংশন গ্রান্ট করা হবো পার্টি को all of the above third question number 19 right to appeal from original decree has been provided under which is section 96 of CPC next question 20 adjournment can be granted current option hochi under order 17 rule 1 CPC okay question number 21 non cognizable offense means बहुत ही easy non cognizable offense माने यार option भीतर होची option B a police officer cannot arrest without warrant okay तो non cognizable offense माने arrest करिया पाई पुलिस को warrant दरकार आ cognizable offense रे पुलिस को arrest करिया पाई warrant दरकार नहीं बिना warrant रे भी arrest करी परिबो तापरे होची question number 22 under which section of CRPC the assistant public prosecutor is appointed तो कोटा यार क्वेश्चन यार सटीक आंसर होची एटा भी सहज सेक्शन 25 रे हमर अछथि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तापरे चलंतु 23 which of the following can make the arrest को माने अरेस्ट कर परिबे एटा बहुत सहज पुलिस ऑफिसर भी कर परिबो मैजिस्ट्रेट भी कर परिबो प्राइवेट पर्सन भी कर परिबो तबे करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन डी all of the above question number 24 under section 50 CRPC it is not mandatory to inform the arrested person that he is entitled to be released on bail kete bele aro correct answer hochi option D without warrant for non bailable offense okay
तापर 25 को जिबा क्वेश्चन नंबर 25 a summons issued by a court must be in एटा तो मते जानथिबे एटा बहुत सहज ऑप्शन सी राइटिंग एंड डुप्लीकेट तापर क्वेश्चन नंबर 26 an executive magistrate is empowered to grant remand under section 167 CRPC for a maximum period of the section 167 CRPC बहुत important सेतर कोन सेटा कोन को जाय जे procedure when investigation cannot be completed in 24 hours 24 hours भीतर जदि procedure complete हे नता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हे नता ता प्रोसीजर कोन है सेतरे रिमांड रे नेबे जदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिमांड नै थाल ताले 15 डेज ओके मैक्सिमम 15 डेज किंतु एट लेखा जे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कथा पचाय जे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अछंती केते डेज पाई रिमांड दवा पाई तार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी 7 डेज ओके चलंतु जिबा क्वेश्चन नंबर 27 Question number 27. Which section provides for joint trial for several persons? That is section 223 of CRPC. Section 28. Power of the court to convert summon cases into warrant cases is provided under. Correct option option B 259. Power of the court to convert summons cases into warrant cases, which is section 259. Then question number 29. Which section empowered the court to examine the accused? Okay, co-section. यार सटीक आंसर होची section option B section 313. तापर होची question number 30. Under section 357 an order of compensation can be passed by the both A and B. Correct option होची both A and B होची ट्रायल कोर्ट भी appellate कोर्ट हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट both A and B. तापर होची 31 होची the object of Indian Evidence Act 872 as set out in the preamble is तो preamble ले कौन लिखा है जी object कौन हवा दक्का तो preamble ले object correct answer होची option B to consolidate define and amend the law of evidence. Okay, चलते question number 32. Law of evidence is an adjective law, substantive law ना IPC टा substantive law किंतु law of evidence होची adjective law जोटा procedure तमे जोटा कोचा सेटा होची तार अन्य नाम होची adjective. Okay, procedure law को बन जाउ CPC CRPC evidence ये तीनटा होची procedure law IPC टा होची substantive law procedure law रो अन्य नाम होची adjective law. 33. Under the Indian Evidence Act 1972, the relevant fact कौन हवा दरकार relevant fact must be legally relevant. Legally सेटा relevant हवा logical लो किसी question ही आसुनी सेटा legally relevant हवा दरकार इधर correct option होची option A must be legally relevant. तापर होची 34 कौन लिखा है जी Confession of one accused is admissible against co-accused. कहते बड़े option D if they are tried jointly for the same offense. Okay, कहते बड़े सेमन दी जोड़ा jointly try करा होती ताको for the same offense. कहते बड़े ही confession of one accused is admissible against co-accused. तो चलन तो 35. Question number 35. A dying declaration is relevant in India. Rahoji option D. Correct in civil as well as criminal proceeding. Civil case re bhi seta relevant or criminal proceeding re bhi seta relevant. Then question number 36. The opinion of an expert can be on the question of option A foreign law. Okay, foreign law रे ही expert आसे की तो opinion देवे ना Indian law तो expert दरकार ना आती. Indian law तो हमें माने जानी चु. किंतु फॉरेन लॉ किछि फॉरेन विषय जदि किछि आसेला ताको एक्सपर्ट सेही जो फॉरेन लॉ रे जे जानि थिबो जे एक्सपर्ट थिबो ताको ता ओपिनियन निहाई परिबो. देन 37 क्वेश्चन नंबर 37 होची सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल करेक्ट ऑप्शन होची option C where the non-production of primary evidence has been accounted for.
ओके जो प्राइमरी एविडेंस रहता है आम सेकेंडरी एविडेंस रिलाई कर दीटा लिखा where the non production of primary evidence has not been accounted for where the non production of primary evidence has been accounted for okay जते बड़े primary evidence को produce कराई परिबन secondary evidence ही हमें नहीं परियो then question 38 A is charged with travelling on railway without ticket the burden of proof कहाँ पर पड़िबो the burden of proof simply कहाँ पर पड़िबो D option D होची correct the burden of proving that he had a ticket is on him तापाके ticket थिला से ही proof करियो okay the burden of proof टा सेही व्यक्ति ऊपर ही पड़िबो 39 when a document creating an obligation is in the hands of the obligator the obligation has been discharged এটা কোন এটা presumption law না presumption of fact এটা কোন the 39 correct option होची option B it is a presumption of fact ओके এটা ফ্যাক্ট কেତେବେଳେ জানিবে কোটা প্রিজম্পশন অফ ল প্রিজম্পশন অফ ফ্যাক্ট প্রিজম্পশন ল হଉଛି ল ଉପରେ যদি କିଛିଟା କୁହା ହଉଛି यार लीगल एटा लीगली कि एटी इलीगालिटी अछि कि एटा इलीगल ए विषय जदि किछि क्वेश्चन आछे ताहले सेटा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ आ बाकी जहा होचे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तापर क्वेश्चन नंबर 40 द हस्बैंड एंड वाइफ आर competent witness for or against each other the question is C both in civil and criminal proceeding criminal और civil दीटा proceeding रे husband and wife then competent witness हे परिबे against for भी हे परिबे against each other 41 fraudulently has been defined as doing anything with intent to defraud कोतरे कराई छी IPC रे section 25 रे fraudulently okay तापरे section 34 of IPC creates a substantive offense ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी इज अ रूल ऑफ एविडेंस 34 को नेकी काहा को पनिशमेंट दिया परिबनी सेटा गोटे रूल ऑफ एविडेंस जस्ट ताकू गोटे सब्सटेंसिव ऑफेंस नय केवल 34 देकी काहा को पनिशमेंट कराई परिबनी सेटा होची खाली गोटे एडिशन को जाय पारे अन्य ऑफेंस जहां लागि थिबो ता सहित 34 लगे दियंती तापर होची 43 Question number 43 the maxim ignorantia juris non executed ता माने होची ignorance of law is no excuse ignorance of fact is excusable is an excuse okay but ignorance of law is no excuse law जदि तमे जाननो ताको excuse नहीं परिबनी माने तो कहि परिबी मु law जान नथली सेति भाई मु ए आई गला सेटा कोर्ट सुनिबनी कान इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज कराई परिबनी ओके तापर होची 44 section 84 of IPC provides for section 44 of IPC provides for जो insanity से होची legal insanity 45 the right to private defense is based on the natural instinct of 45 was self preservation natural এটা বহুত থর পড়ছে কোশ্চেনটা তো মনে রাখবে the right to private defense is based on the natural instinct of self preservation মানে ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥାଉ ନିଜକୁ ତାପରେ ହେଉଛି what is this chapter 20 of IPC deals with এটা ବହୁତ ସହଜ offense related to marriage option A then 47 the essential ingredients of a crime are crime रे essential ingredients कौन तो होची current option होची option D correct knowledge intention and action okay तो बेचारा तो question number 48 in which case Supreme Court held that the defense of drunken can be availed of only when intoxication produces such a condition as the accused loses the requisite intention for the offense so correct option is option B Mubarak Hussain versus state of Rajasthan तो गोटे केस लॉज आपन को पढ़िया कहले गोटे बहुत ही
बढ़िया बुकटा सेटा होची सामत अग्रवाल का केस लॉज से बुकटा आपण ऑनलाइन अवेलेबल अच्छी लाइक अमेजन में पाई परिबे आ तांका निज वेबसाइट को भी आपण जाके से बुकटा परचेस कर परिबे सेतरे लैंडमार्क केसेस सब डिस्कस कराई माने सब थर माने जेमती दिया है से बुकटा आपण को केते बेले यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो करके आपण सहित शेयर करदेवी क्वेश्चन नंबर 49 sex with a girl through fraudulent consent amounts to option D rape amounts to rape. Then 50 every murder is culpable homicide but not vice versa. The statement is gone. The statement is true. Sabu murder होची culpable homicide किन sabu culpable homicide murder no. Okay. True. 51 the limitation act and the code of civil procedure are to be read together because both are statutes relating to the procedure and they are in they are in an option hochi A parimetria. I don't know how to pronounce it. एमती प्रोनाउंस करता माने होची on the same subject or the matter. तो perimetria रो माने होची on the same subject and the matter. तापर गोटे modus operandi लेखा है सेटा भी बहुत important. सेटा होची a particular way of doing something. जदि गोटे particular गोटे जिनसटा गोटे particular way रे करछ ताको modus operandi कहंती. सेटा भी बहुत टाइम रे यूज करा जाय. आ एटा होची perimetria जेमती code of civil procedure and limitation act दी जणा perimetria माने on the same subject or the matter. Okay. CPC जो matter deal करची limitation act भी same matter ही deal करची. So they are both perimetria. Then 52. For the balance due on a mutual open and current account where there have been reciprocal demands between the parties, the period of limitation is यार current option होची 3 years. अधिकांश 3 years ही थाई. जेमती कि जति account mutual contract ओके ओडा सब 3 years थाए नाले 1 years थिबा किंतु जते बेले पोजीशन कथा होची मॉर्गेज कथा आसे किबा सूट फाइल ओडा सब बेले बेले 12 years 30 years थाए नाले बाकी जते सब अछि 3 years ही थाए आ जोटी लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब कराइनी सेटा केते हबो 3 years ही तो को हबो Tarava. Then question number 53 for the possession of immovable property when the plaintiff has become entitled to possession by the reason of any forfeiture or breach of condition, the period of limitation is how many years when the forfeiture is incurred or the condition is broken. तो एक क्षेत्र रे period of limitation होची 12 years. मु कहली एटा possession विषय रे क्वेश्चन टा पचराई छी. Possession of immovable property विषय को आइ छी तो तादर period of limitation सबले अधिक ही थाए. सेतरे होची ए केस रे आंसर होची बी 12 years. तापरे होची क्वेश्चन नंबर 54 where the period of limitation for filing a suit expired on 28th May 1961 केते केबे expired होची no 28th May 1961 किंतु but no judge or officer could enter into the court premises due to picketing of the civil court from 19 to 29th May किंतु केही आसी पारलेनी को जज को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट केही भी कोर्ट प्रेमिस को प्रवेश कर पारे कारण पिकेटिंग चलता सिविल कोर्ट रे 19 to 29 क्योंकि 28 मे रे तो एक्सपायर हो जाउची तापरे कोन हला द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ऑन द 30th मे जो 30th मे रे प्लेंट को प्रेजेंट करा हला सेटा कोन को माने सेटा वैलिड होबा कि नै तार ऑप्शन बी यस सेक्शन 4 अनुसार जते सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कोन कहूची एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज जते कोर्ट क्लोज हेची जदि मैंने गोटे एक्सपायर जो प्रेस्क्राइब पीरियडटा जो लिमिटेशन जदि एक्सपायर ही होची द डे से डे रे ही कोर्ट क्लोज अछि तो जब भी कोर्ट रीओपन सब सेबे ही आउथरे सूट फाइल करि परिबा इंस्टीट्यूट करि परिबा हला तो एथरे ऑप्शन बी होची राइट आंसर इन द टाइम since section 4 is an exception to general rule laid down in section 3 of the act. So chalo to question number 55 where the prescribed period for any suit appeal or application expires on a day when the court is closed. The suit appeal or application may be instituted preferred or made on the day according to the option D when the court reopens. Eta jota section 4 limitation act best question ta. तापर हो 56
appeal from an order of acquittal under section 417 clause 1 or 2 of the Code of Criminal Procedure is dash from the date of the order appealed. Our contact action is 90 days. Question number 57. The accusation of easement right is acquired by prescription after the uninterrupted with the person. The 57 कौन हो 20 years. Government है 30 years. Okay. किंतु यदि private person हो 20 years. 58 हो to set aside a sale in education of a degree including any such application by a judgment debtor from the set aside करिवो जोटा from the date of sale को डिक्री ऑफ द सेल को सेट असाइड करिया पाई केते कोन प्रेस्क्राइब पीरियड रही तार सटीक आंसर होची ऑप्शन ए 60 days. ओके टू सेट असाइड अ सेल इन एजुकेशन ऑफ अ डिग्री के एजुकेशन करे गोटे सेल करा होची ताको सेट असाइड करिया पाई जजमेंट डेटर पाखरे केते टाइम अछि 60 days भीतर ताको करिया पड़िबा एप्लीकेशन फाइल करिया पड़िबा. Then the question number 59. The law of limitation bars action in the court but not. Correct option is plea of estoppel. Plea of estoppel को सिर्फ bar करेगी. Okay. 60. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in this schedule, the period of limitation is कोई 3 years. यदि कोड भी किसी दिया ही नहीं तो period of limitation कितने रहेगा 3 years रहेगा. तब चैनल 61. Attached to the earth means thing rooted in the earth, thing embedded in the earth, things attached to. Attached to what is so embedded in the earth, all of the above. Okay. Then question number 62. A transfer rupees 5,000 to B on the condition that B resides with A, otherwise to C. Okay. The transfer is favor of C is it have a transfer of condition precedent. Kana already condition ta पूर्वर ही लगी था कंडीशन अल्टरनेट ट्रांसफर के तहत से कंडीशन टा पछरे लगी था ओके कंडीशन सब्सिक्वेंट होता कि कंडीशन प्रेसिडेंट है कारण सारा आगुरी ही कंडीशन टा लगा तो राइट आंसर इज कंडीशन प्रेसिडेंट. Then 63 restrictive covenants by contract. Okay, restrictive covenants are तार सटीक आंसर होची तो सटीक आंसर होची सी बोथ ऑफ द above. गोटे होची ए भी तार ठीक करेक्ट और बी भी करेक्ट. बी कौन कही कंडीशन इम्पोज्ड बाय ट्रांसफरर restricting user enjoyment such contract which restrict the user enjoyment है जो कंट्राक्ट रेस्ट्रिक्ट करची कहा को रेस्ट्रिक्ट करची यूज करिवा को रेस्ट्रिक्ट करची कि एंजॉय करिया को रेस्ट्रिक्ट करची ताको रेस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स कुआ जाए. ओके ताले ऑप्शन ए होची सच कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रेस्ट्रिक्ट द यूजर एंजॉयमेंट. ऑप्शन बी कंडीशन इम्पोज्ड बाय ट्रांसफरर रेस्ट्रिक्टिंग यूजर एंजॉयमेंट. सो दीज आर द थिंग बोथ ऑफ द above. So our next question, question number 66. English mortgage means option A, mortgagor should bind himself to repay mortgage money. Yeah, option B, property mortgage should be absolutely transferred to the mortgage. Absolute transfer हमको करिया को पड़े English mortgage. Option B correct. Option C, on the payment of mortgage money, mortgage will recover the part. It question option D होची correct. All of the above. तब चैनल तो सेक्शन not section question number 67 where two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another. The transaction is कौन को exchange करते. Question 68 a lease can be determined. Our correct option होची by all of the above, by merger, by forfeiture, by surrender of the above. तब चैनल तो 69 redeem of foreclosure down is the right of a mortgage. Is the right of mortgage. 69 B होची right answer. Then चैनल तो question number 70. No mortgagee paying of a prior mortgage shall thereby acquire any priority in respect of his original security. It is rule against tacking. Option B correct answer. तब होची question 71 law of contract
is the whole of agreement, the whole of application, the law of agreements creating obligation, the law of obligation. এটা হচ্ছে অপশন সি, the law of agreements creating obligation. তারপরে হচ্ছে 72, announcement of auction sale without reserve is an option A, invitation to offer, option B, offer, option C, incomplete offer, option D, inchoate offers. তো এটা হচ্ছে invitation to offer ହେଇଯିବ. Okay, announcement of auction sale without reserve होचे invitation to offer. ଆଉ ଗୋଟେ invitation offer ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 1800 rupees, ପ୍ରାଇସ୍ ଟ୍ୟାଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି invitation to offer ଯିବ. ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି 73, 70 consideration may be होची A, present, past, future. Okay, 74, obligation resembling those created by contracts are known as quasi contracts. Okay, जोटा contract भलिया देखा जाए सेटा होची quasi contracts. 75, the right of subrogation is a contract of guarantee is available to, contract of guarantee लिखा है ताले surety. Okay, 26 question answer होची general lien is available to, general lien कथा जता आछे से banker. Okay, available to banker. तापरे होची question 77, XS said to a shopkeeper, let P have the goods, I will see you pay. This is a contract of guarantee, and guarantee दोची. Okay, तापरे 78, 78 कौन कोची, when consent is caused by a fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. Okay, void लेखि आसी जिबेनी सेटा voidable जदि fraud, coercion और undue influence एडा सब जदि होची ताले सेटा voidable हबो. तापर 79, the foundation of law of damages for breach of contract is laid down in case laws को case required law lays down in it लखा जा एटा होची option C होची right answer, this versus gramophone को. Okay, तापर जानन्तु question 80, question number 80, acceptance of leisure sum in full satisfaction of debt is discharge of debt. Question number 81 कोची, under the Hindu Succession Act the property of a male Hindu dying intestate shall devolve around to the provision of, এটা होची option A होची correct answer, section 8. Okay, तापर जानन्तु 82, A dies after the commencement of the Hindu Succession Act, leaving behind 3 sons, B, C, and D. Okay, the interest in the property passed to by. तो इतना लिखा जी A dies after the commencement of the Hindu Succession Act, leaving behind the 3 son B, C, D थिले और A C मरी जाइतले, तो तांकर इंटरेस्ट केमती डिवॉल्व करा हबो तो बाय सर्वाइसिव जे बसिबा तर टेस्टामेंट सक्सेशन हबनी काना सेटा होचे किछि भी विल करनांती सपिंडर रिलेशनशिप किछि भी सेमती हिंदू सक्सेशन सेमती किछि लिखा हैनी सर्वाइवरशिप रे. ओके, तापरे चलंतु क्वेश्चन नंबर 83, any property purchased by a female Hindu whether acquired before or after the commencement of the act shall be held by her कौन है held by her full owner. Okay, absolute and full owner है. तापरे क्वेश्चन नंबर 84, one who is related by blood to the deceased through female is known as option B cognate, और यदि through wholly through male होची agnate. तापरे होची question 8 number 85, a Hindu dies leaving behind father and sons, daughters, son, they are होची class 2 heirs. ओके, फादर जिते बेले आसले मदर होचंदी क्लास 1 ही जाउचंदी, किंतु फादर जदि क्वेश्चन आसिला ताहले से सब बड़े क्लास 2 ही जीवो, फादर जिते सुनदेबे से क्लास 2 हेयर ही जीवो. तापरे होची 86 क्वेश्चन नंबर 86, द इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाइज ओनली टू द केसेस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट केते बेले अप्लाई हुए
ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟାରୀ ସକ୍ସେସନ୍ ଦୁଇଟାରେ। ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେ ୱିଲ୍ କରି ଯଦି କେହି ମରି ନଥିବେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ୱିଲ୍ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟାରୀକୁ। ତାପରେ 87 ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦି ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ डिसीज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे सेटा कोर्ट ऑब्वियसली कोर्ट ही करबा आउ कि करबनी। तापर 88 होची अ होलोग्राफ विल इज अ विल रिटन बाय टेस्टाटर। तो होलोग्राफ विल टा कोन? होलोग्राफ विल माने हैंड रिटन विल, पूरा हाथ रे पेन रे एमते लिखिथिबे सेटा को होलोग्राफ विल कहती। तो किए लिखिथिबे? टेस्टाटर, जे विल करूथिबा से ही लिखिथिबो। ओके, तो होलोग्राफ विल कहती। देन चलंतु क्वेश्चन नंबर 89। Question number 89 लिखा है a legacy is bequeathed to A and in case of his death to B. Okay, legacy A को दिया हुआ, in case of his death A मर जाए ताले B को दिया। If A survives the testator, the legacy to B, एटा तो क्वेश्चन सहज doesn't take effect। यदि A survive कर जीवो ताले A को ही मिलेगा, अब B को आओ मिलेगा। 89 then 90 a copy of the will certified under the seal of the court with a grant administration to the estate of the testator is known as probate। probate कहती गोटे copy of the will थिबो जोटा कि under the seal of the court रे certify कराइथिबो सेटा होचे probate। then 91 the following section of the specific relief act deals with the contract with the specific performance with variation। एटा बहुत तरह पड़े तो variation कथा जत्ते बेले आसिला आपण वर्ड टा मन रखना। तो variation specific relief act contract with specific performance with variation, जो वर्ड रखे मन रखे variation। तो सब सेक्शन 18 92 the principle in which section 12 of the specific relief act is based on। प्रथम सेक्शन 12 of the specific relief act कौन कहे? सेक्शन 12 of specific relief act कहे जे specific performance of part of contract। तो part of contract को केंति specific performance करे हबो सेटा कहे। तो एटारे को तीटा रूल अप्लाई प्रिंसिपल अप्लाई हम। तो को सटीक ऑप्शन हो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए लिखा है इक्विटी लुक्स टू द सब्सटेंस रादर दैन टू द mere लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी इक्विटी लुक्स टू द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड requires substantial compliance with the condition rather than its literal fulfillment। so both A and B apply हम। तो चलते 93 हो the principal doctrine of specific performance is based on। option A specific performance will not be granted where the damages are adequate remedy। ठीक। option B the granting of specific performance is within the discretion of the court। सेटा भी ठीक। option C specific performance would be refused when the contract was wanted mutually at the time when it was entered into। तो all of the above। okay, चलंतु अब अल्प क्वेश्चन रहला जल्दी शेष करिबा। Question number 94 one of the following statement is not applicable according to section 8 of the specific relief act। तो section 8 of the specific relief act को statement applicable हुए। तो section 8 which is liability of a person in possession not as a owner to deliver to person entitled to immediate possession। तो liability of possession से owner ही न थिवा कि से possession ने थिवा से entitled अछि immediate सही person को से ताको सही person को deliver करिबा जो person immediate possession by entitled थिवा। तो एतर owner against a suit file करि परिबा। no suit can be filed but against the owner। तो owner कथा ही सुननी। तापरे सेक्शन सॉरी नॉट सेक्शन होची क्वेश्चन 95 according to section 15 one of the following person cannot enforce the specific performance of a contract। तो डी होची correct answer। or remainder man for dinner not for life। then होची question number 96 contracts which cannot be enforced under section 14 of the specific relief act where compensation is adequate remedy। जोटी compensation adequate remedy थिबो हाँ एठी भी परफॉर्म करी हबनी specific performance contract involving personal skill जोटी एटा मन रखते जोटी personal skill based contract हेची सेटा को तमे specifically enforced करी परिबनी। ओके, contracts of determinable nature सेटा भी करबे तेरा all of the above। तापर 97 होची one of the following is a contract which has been held not indivisible।
a contract for the sale of property in one lot, a contract for the sale of plot of land cannot be regarded as separate contract for selling different portion of the plot. Or option C, where the property is sold in distinct lots with separate contracts for each lot. Or option D, where a person enter into a mutual contract for sale or purchase. Contract has been held not indivisible नुहे ताले ऑप्शन डी हो जी करेक्ट आंसर वेयर ए पर्सन एंटर इनटू ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेस. Then question number 98. In a suit for specific performance, the defendant may set up the following grounds. Option A, uncertainty and exchange of power. Option B, hardship and unfair advantages. Option C, uh, both A and B. Option D, none of the above. And correct answer is none of the above. Then 99. Question number 99. Rectification of an instrument under the Specific Relief Act is allowed when fraud or mutual mistake of the parties to a contract is allowed under era 26. Option A is correct. Okay. The last question 100. Refuse to assign a contract by a court is laid down in one of the following section of the Specific Relief Act. 27. To option B होची correct. तो इटा थिला हमर 2012 रो प्रीलिम क्वेश्चंस. आपण को सेक्शन निजे मन रखिया पड़िबो. केस लॉस भी आपण गोटे भल बही जोटा मु कहली समर्थ अग्रवाल कर सेटा आपण किनी की देख परिबे सेतरे पूरा सिस्टमैटिक वे रे सब केस लॉस को डिस्कस कराई छे. और नेक्स्ट हमें डिस्कस करें 2013 क्वेश्चन. थैंक यू.